Accounting principles. The first one is accounting entity, or alternatively it is named as business entity principle. See, dear friends, I have pointed out few important points from each of these accounting principle which can be referred as your notes. Very simple language and very easy to understand. Let's see. Business is considered to be separate and distinct from its owner. Owner are considered as the creditors of the business to the extent of their capital. पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको ये बता रहा है कि बिजनेस इज डिफरेंट इन बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट देन इट्स ओनर्स एंटिटी. ओनर और बिजनेस दो अलग सेपरेट एंटिटी है. द सेकेंड वन सेज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. Transaction and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprise. Value of money that represents static value recorded at the value on the transaction date. जो भी transaction होता है that has to be in the monetary terms. That represents your money measurement principle. Then your next is accounting period principle. The period of the life of the enterprise is broken into smaller periods termed as accounting periods. An accounting period is the interval of time at the end of which income statement, profit and loss account or statement of profit and loss in case of companies and balance sheet are prepared to know the results. Accounting period principle is basically relates कि जब आप एक अकाउंटिंग ईयर को या आप अपने एक पूरे ईयर को कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो. सो अकाउंटिंग पीरियड आपको ये बताता है कि वॉट एवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग रेफरिंग टू वन अकाउंटिंग पीरियड. जो भी अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल डेट या फाइनेंशियल ईयर. ये सब क्यों फॉलो हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. देन नेक्स्ट इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. द कंपनीज एक्ट 1956. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू एड हियर कंपनीज एक्ट 1956 has been replaced with Companies Act 2013. The Companies Act 1956 provides for full disclosure, which will make the financial statements more meaningful. That means all those material details or data have to be disclosed. That helps the internal and external users to make certain important decisions. Materiality principle. It refers to the relative importance of an item or an event. Only those items shall be disclosed that have significant relevance to the user. Just for a small example to understand this materiality, balance sheet में you show the assets, fixed assets, current assets. But कभी कभार क्या होता है, रिपेयर के लिए हम नट बोल्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं. बट टू शो दैट नट बोल्ट कॉस्ट और टू शो दैट वैल्यू इन बैलेंस शीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट वर्क्स हियर. आपको बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है. एवरीथिंग हैज़ टू बी शुड हैव सम रेलिवेंट यूसेज टू द यूजर्स. नाउ यूजर्स इंक्लूड ऑलवेज रिमेंबर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. द अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ensures that the financial statement present a realistic picture of the state of affairs. आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट शुड बी रियलिस्टिक पिक्चर. दैट मीन्स जो जैसा अमाउंट आप दिखा रहे हो दैट हैज़ टू बी इन दैट वैल्यू. ऐसा नहीं कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, कम वैल्यू पे दिखाया, ऑल दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ और है. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंजर्वेटिव सेज कि वॉट एवर द वैल्यूज इज देयर यू हैव टू शो इट. Exceptions provided, of course. Historical cost principle. An asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it. Asset is recorded at the cost at the time of its purchase but is reduced by charging depreciation. जब भी आप एसेट खरीदते हैं इट्स द बेसिक लॉ बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर और द कॉन्स्टेंट यूसेज इसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है डे बाई डे. सो ईयरली टू कैलकुलेट दोज वियर एंड टीयर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली आपको ये बोलता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो बुक वैल्यू है, जो आपके एसेट की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर आप अपने एसेट को डिस्क्लोज करिए आपकी बैलेंस शीट में.